Hey Nikita, thank you for chunking out some valuable time to speak for us. So, I would like you to introduce yourself, please. Firstly, thank you so much for giving me this opportunity to be on this platform. It's my pleasure. And thank you. So, I am Nikita, currently a PhD scholar, a published researcher, psychologist, and a content writer, and a blogger. I have my own website, namely Psychic Motivator, wherein I post articles related to the various subfields of psychology so that it is easily accessible, authentic information is been provided to the peers or anyone who is interested into the field of psychology. So that's a little intro about myself. Right. So, in PhD, what field did you choose? I am currently doing my PhD into clinical psychology, and I am working on my topic currently. Since it is such a big requirement in PhD to do research, so Mhm. let us just take the topic of research and talk about it a little. So, Sure. in your own words, can you define what research is? All right. So if we go by the term research, so it means use of previous knowledge and the concepts, method that are being used in that study or the research, and understanding of an individual of that concept. That is what we call research. Because many a times people think that research is something when we invent something, but research is also when we acknowledge the previous findings that we have in our literature, and then when we put our understanding or what we conclude through the findings, that is also we call as research. How is it different from an experiment? Okay, so experiment जो है, that is a part of research. When you do an experiment in order to prove a research, जरूरी नहीं है रिसर्च के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट हो. लाइक आई सेड, रिसर्च में जो है हम लोग हो सकता है कि पुरानी फाइंडिंग से अपनी अंडरस्टैंडिंग्स बता रहे हैं. जरूरी नहीं है समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेस्टेड, सम an experiment has been conducted. So that's what the basic difference is between research and experiment. Okay. And why is research, especially in psychology, so important for advancement of the human race? Okay, so if we talk about psychology, most of the people considered is as a layman thing, that anyone can understand psychology, what the person is thinking about, but actually it's not. We don't actually study what person is thinking. We study human behavior and then we analyze what he might be thinking. मतलब उसका थिंकिंग का प्रोसेस क्या होगा. एनालिटिकल थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है. दैट्स व्हाट वी स्टडी. एंड एडवांसमेंट साइकोलॉजी में रिसर्च का क्यों जरूरी है? बिकॉज व्हेन वी कम ऑफ समथिंग विद द रिसर्च विद द बेसिस कि ठीक है, हमने ये किया तो ये हुआ उसका आउटकम, सो पीपल ट्रस्टेड मोर. पीपल टेक इट एज समथिंग ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट. ऐसा ही नहीं है कि वे कोई स्टेटमेंट दे दी है हवा में कोई भी. व्हेन रिसर्च इज implicated, when research is included in anything, not just the psychology, तो वो इसको एक लेवल अप कर देती है. पीपल अंडरस्टैंड इट. अच्छा ठीक है, देयर इज अ प्रोसेस फॉर ईच थिंग. ठीक है, पूरा स्टेप वाइज है. ये ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आया और एक स्टेटमेंट दे दिया and then we are trying to prove it. So we go step by step, then we analyze, then we interpret and give our concluding statements that okay, our behavior is dependent upon something. Mm. So that's the important of research in psychology, because people consider it as a very normal subject. So in order to have it like okay, this is science, this is not like
anything that we are doing, we are speaking, there is a proper, we are proper analyzing it, and then we are interpreting it. So that's what importance the research holds in the field of psychology. So, for example, before the Mhm. 1960s, people used to smoke like chimneys, right? Because Mhm. even if they knew that smoking is not good, there was no conclusive evidence to prove it until the Mhm. Surgeon General's warning, which was done after extensive research. So, would you say that Mhm. this is the sort of thing that helps to further humankind? Yes, of course, because pehle, as you said, there was no, people used to know, ठीक है, ये होगा, lung cancer हो जाएगा, ये हो जाएगा, but there was no access evidence, ठीक है, lung cancer जो है वो और भी चीजों से होता है, जरूरी नहीं है सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग से होता है. But now we have proper statistics, we have proper numbers that okay, supposedly this much, if people 10 people are smoking, then 7 or 8 people have chances to develop lung cancer. So that's all because of research and statistics that we have this number, we are sure about. Okay, What are so the yeah? What are the kind of if like, rationalizations? Yeah, please go ahead. no, you ask it, it's okay. What are the kind of rationalizations that people use even after seeing a conclusive proof? Like, for example, 7 out of 10 people, for example, let's say, die from smoking, right? Mhm. So people tend to say, "Meri dadi hai, 90 years ki hai, she still smokes." So they have such a small sample size. So are people not good statisticians intuitively? Why do they rationalize so much, even when the truth is in front of them? um that's like kind of a personal thing that gets to them. मतलब ठीक है, हम लोगों ने तो स्टैटिस्टिक्स दे दिया, 10 में से 7 हो रहा है, बट उन्हें सामने दिख रहा है कि ठीक है, शी इज स्मोकिंग एंड शी इज लिविंग 100+ years, देन व्हाई इज इट सो? सो उसके लिए क्या है, एनीथिंग दैट इज कंज्यूम्ड इन एक्सटेंट दैट इज हार्मफुल टू अस. जरूरी नहीं है कि वो कोई भी चीज है, इवन इफ दैट्स वाटर, लाइक वी से ड्रिंक दिस मच लीटर ऑफ वाटर, अगर हम लोग पानी भी ज्यादा पियेंगे तो वो भी हम लोगों की बॉडी को इफेक्ट करेगा, नॉट जस्ट लाइक वी हैव टू स्मोक सिगरेट फॉर दैट मैटर. तो हर एक चीज के लिए अभी उसके लिए क्या है, इंडिया में ये है, जब तक चीजें होती नहीं है ना, लोगों को विश्वास नहीं होता है. जैसे कोविड में था, बोला था कि मास्क जो है मैंडेटरी है, you have to maintain proper hygiene, you have to maintain distance. बट जब तक केसेस जो है वो बढ़े नहीं, किसी को भी ये नहीं था कि ठीक है, हाँ करना है, करना है, करना है. बट व्हेन दे सॉ इट, ठीक है, हाँ लोग मर रहे हैं, इंजेक्शंस की कमी हो रही है, सिलेंडर्स की कमी हो रही है, देन वो अपने आप करने लगे. उस टाइम पे उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी. दे यूज टू, सम पीपल वर लाइक, जो बिल्कुल भी एक भी यूज नहीं करते थे, वो दो दो मास्क यूज करने लग गए थे, बिकॉज वही है ना कि जान प्यारी है. तो वही है कि किसी भी चीज के लिए इंडिया में ये है चीज, दे डोंट फॉलो इट बिकॉज उनको लगता है कि ठीक है, सामने वाला तो, उसको क्या ही पता है. His तो genetics may be weak. I'm superior. because I think that is something that they have observed in their ancestors as well. They Hmm. used to live their livings by their own. There was no one to guide them. Like अगर हम लोग अपने पापा की मम्मी की बात सुने, दे आर लाइक, ठीक है, हमें तो कोई बताने वाला भी नहीं था, तुम्हें तो सिखाने वाला है, तुम लोग फिर भी नहीं पढ़ रहे हो. This is like very common statement that you'll get to hear in every middle class children के घर पे. Because उस टाइम पे ऐसा होता था, there was no one to guide them because people were working in farms and like these things, so they didn't had time to give their childrens to to make them Guide. understand what is Yeah. right, what is wrong, and whether you'll have.
but it will be to study this much, whether you'll be, because उनको ये होता था कि ठीक है, we are farming and our children will be also farming in future. एजुकेशन में तो जाओगे क्या, पैसा बर्बाद है, बट नाउ वी आर गेटिंग टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, कि एजुकेशन से क्या इम्पैक्ट है. Right. Okay. Can we talk a little about biases, heuristics, people are more likely to die inside their own swimming pool than by a shark attack, right? Mhm. Or a child is more likely to die in a friend's swimming pool than he is by a gun that their parents have. But the gun has such a shocking visualization in our head that we tend to keep that locked away while we encourage our children to go and swim, right? So why, this is the crux of my question, why are people not so good statisticians until they research properly? In order to have a conclusive statement that we can, that is reliable, valid, and can be generalized into population, we need to have statistics. अगर statistics नहीं होगा, अगर कोई भी एक fixed number नहीं होगा, so we won't be able to replicate in future. That won't be having any validity. अगर कोई भी हम लोग research conduct कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई result आया, और अगर हम लोगों के पास statistics नहीं है for that matter, और future में हम लोग उसको replicate कर रहे हैं, और result जो है वो different आते हैं, but we won't be able to know कि कितना different है. Okay. Whether it is like 0.5 above या ज्यादा है या कम है. स्टैटिस्टिक्स का रोल ये होता है, दिल टेल यू कि ठीक है कितना ज्यादा है, कितना वेरी कर रहा है, वेदर जो पहले के रिसर्च का जो रिजल्ट है वो अभी वाली रिसर्च से मैच कर रहा है, एंड वेदर इट कैन बी जनरलाइज्ड ऑन पॉपुलेशन. सो आई, without statistics it would be like very vague to put any statement in front of anyone, especially into these days, because people generally trust those who have evidence to prove what they are saying. Right. So I think statistics are very much important. What are the different kinds of methodologies that are used in a research? ओके, सो मेथोडोलॉजी, अगर हम लोग सिर्फ बात करें कि मेथोडोलॉजी होती क्या है, तो मेथोडोलॉजी जो होगा वो एक प्रोसेस होगा कोई भी रिसर्च को कंडक्ट करने का. सो मेथोडोलॉजी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है, और कोई भी एक ऐसी क्लिनिकल स्टडीज भी हो सकती है, और ethnographic हो सकती है, epidemiological research. So there are different methodologies that a researcher use in the field of research, or when doing a research. There are different types of methodologies. Right. Could you give an example? Sure. Like I said, epidemiological studies जो होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें क्या होता है, कोई भी एक डिजीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट इज कॉजिंग इट, एंड उसको कितने एक्सटेंट तक, मतलब उसको कोई भी फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन इट, and what all ways we can use to treat it or prevent it. जैसे अभी हम लोग करंट का एग्जांपल है कोविड. सो कोविड के ऊपर जितनी भी रिसर्च जो है हो रही है, दैट विल बी कॉलिंग इट एज एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज. कोई भी जो रिसर्च जो है किसी भी डिजीज के ऊपर होती है, when it is involving cure, prevention, and uska etiology and everything like that, so that comes under epidemiological research methodology. So why do you think, in your opinion, there is a need for increase in research laboratories in India?
Okay, so the need to increase research laboratories in India is because into labs we can have experiments with the tools that are made to measure what it is to be measured. मतलब reliable होंगे वो, valid होंगे, मतलब उसके थ्रू हम लोग कोई भी रिसर्च करेंगे और अगर फ्यूचर में रिसर्च करते हैं तो उसका जो है रिसर्च का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा. It can be concluded. It will have certain norms that will be followed. So the need to establish research laboratories is because we need to have reliable, valid results that can be generalized into population. जितना ज़्यादा laboratories होगा उतना ज़्यादा authentic जो है research होगा, उतना ज़्यादा scientific जो है वो research होगा. Okay. And what are the ethics involved in conducting research? So they're very like there are so many ethics that are been involved, and that purely depends upon you know uh, the topic or the area that you're working upon. अगर जैसे ethics की अगर हम लोग बात करें animals पे जो है these days we it is not ethical to conduct research on them. So अगर कोई research कर भी रहा है you can only observe them. पहले ये होता था कि ठीक है anything that is to be implicated or that is to be related to humans, people used to experiment upon monkeys, but nowadays it isn't actually ethical to conduct research on animals because ठीक है वो काफी सारी beneficial and non beneficent हो जाता है then. And another ethical consideration is when we do research on a participant without informing them. That is Right. unethical. When we are using any personal information of the researchee on a bigger platform, or we are sharing it on social media, that is unethical. Because किसी का भी पर्सनल जो चीज है वो दैट इज हम लोग सब पूरी पॉपुलेशन के सामने हम लोग लेकर आके आ रहे कि ठीक है द पर्सन इज स्मोकिंग XYZ इज स्मोकिंग, सो दैट बिकम्स अनएथिकल. दैट विल हैव मोर लाइक ठीक है उनका ये हो जाएगा कि आगे से रिसर्च में जाना नहीं है, मेरे बारे में सब सब जो है बुराइयां करते हैं. हम लोगों के में जैसे ये होता है कि साइकोलॉजी में ना BS ड्यूरिंग बैचलर्स एंड मास्टर्स वी हैव प्रैक्टिकल्स में हम लोगों को जो है पार्टिसिपेंट्स लाने होते हैं on which we can conduct our assessments upon. इंटेलिजेंस का है या क्रिएटिविटी का है. सो पीपल आर लाइक मेरा ना सिर्फ नाम मेंशन मत करना, जस्ट मेंशन इट लाइक ABC. वी आर लाइक इट्स ओके, विल मेंशन इट दैट ओनली, बिकॉज उनको पता है कि ये जो टेस्ट जो है कंडक्ट होने के बाद टीचर्स के पास जाएगा एंड दे विल बी लाइक ओके इसका क्रिएटिविटी लेवल थोड़ा कम है. सो दैट काइंड ऑफ ब्रिंग्स इन थोड़ा एक हो जाता है कि डर हो गया Personal या factor. पीपल विल जज इट, थोड़ा Hmm. जजमेंट का ये हो जाता है फियर. सो इट्स ऑलवेज लाइक बेटर to be ethical into that matter, that we should Right. have the personal information with our own self and we should not share it uh, with others publicly. So these are like few examples of ethical standards that we need to meet. Is any agreement also given to the participant to sign? Yes, before like having any participant getting into our research, we give them a consent form that mentions that okay, we are conducting a research upon you, and it will take this much of time, and it can be used for academic purpose only, and all your personal information won't be used in a unethical manner. And ये सारा जो है उसके कंसेंट के ऊपर वी राइट इट एंड वी गेट इट साइंड with the participant who is into a research, so that he is able to know. ठीक है, debrief हो जाता है उसको कि रिसर्च के अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा रोल क्या है, जो मेरी जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो बाहर तो नहीं चली जाएगी, एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी या नहीं होगी. And is any compensation also awarded to the researcher?
to the participant. Right. So it depends, like कुछ लोग होते हैं कि they give money these days, because participants का ये होता है कि उनको कुछ incentive चाहिए होता है, थोड़ा motivate हो जाए to be your participant. So these days, like people are getting their form filled by like saying कि ठीक है 10 rupees पेटीएम या 20 rupees पेटीएम we'll be giving you, ऐसे कुछ का ये होता है कि okay we are conducting a research and then we'll be providing you the result that we are getting. जैसे personality का है, कुछ रिसर्च जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना वो पहले से बोलते हैं कि ठीक है ओके यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च बट यू विल हैव टू शेयर द रिजल्ट्स विद मी एज वेल. जैसे पर्सनालिटी का असेसमेंट हो रहा है, देन दे विल बी लाइक ओके जस्ट टेल मी ओके वेदर आई एम न्यूरोटिक और नॉट, ठीक है, वेदर आई एम एक्सट्रोवर्ट और नॉट, वेदर मतलब कौन से उसमें लाइक करता हूँ, जस्ट टेल मी द रिजल्ट्स. तो हर एक चीज में लाइक इंसेंटिव के तौर पे जरूरी नहीं है मनी हो सकता है कि वो रिजल्ट जानना चाहते हो. सो इट कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिसिपेंट की उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. कुछ लोग होते हैं कि ठीक है मतलब हम लोग जैसे करते थे कि मैंने बताया प्रैक्टिकल्स के टाइम पे हम लोगों को पार्टिसिपेंट चाहिए होते थे, तो वी यूज्ड टू लाइक ऑफर देम ठीक है हम लोग चॉकलेट देंगे प्लीज पार्टिसिपेंट बन जाओ मेरा फाइनल्स का प्रैक्टिकल है प्लीज पार्टिसिपेंट बन जाओ. सो दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू. सो वही है कि हर किसी का डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव जो है डिफरेंट हो जाता है इंसेंटिव कि कौन क्या दे रहा है. वो काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना इंसेंटिव के भी काम कर देते हैं. ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड यू नीड पार्टिसिपेंट, आई विल बी योर पार्टिसिपेंट. Especially psychologists who can understand other psychologists. Yeah, they are like okay we are there for you, we'll help you don't worry, Right. we'll get your data filled. How important is the role of a statistician for the economy and scientists? Okay, so इकोनॉमी के लिए एज आई सेड स्टैटिस्टिशियन जो है वो क्या करते हैं, वो सिंपली Statistics. करते हैं या स्टैटिस्टिक्स करते हैं. तो स्टैटिस्टिशियन क्या करते हैं, दे एनालाइज द नंबर्स जो होते हैं. दे आर प्रोफेशनल दैट यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू कलेक्ट और एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ देम. ठीक है, उसको कलेक्ट कर लिया, पहले एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, देन फिर उसके बाद इंटरप्रेट करने के बाद देन दे आइडेंटिफाई और प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स कि ठीक है अभी हमारे सामने ये है बट इसका जो है फ्यूचर में क्या वी कैन प्रिडिक्ट कि फ्यूचर में ये हो सकता है. वी प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप विद इन डाटा कि ठीक है अगर एक ज्यादा बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक ज्यादा बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है या वो भी कम, मतलब ऐसे वी फाइंड द रिलेशनशिप एज वेल. सो साइंटिस्ट और इकोनॉमी जो है वो कैसे हेल्प करेगा, वो ऐसे जैसे आजकल हम लोग ये जो ट्रेड मार्केटिंग ये सब हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं इकोनॉमी के लिए, पीपल आर यूजिंग बिटकॉइंस एंड ऑल. तो वो कैसे इन्वेस्ट करना है हम लोगों को, विल सी यूज स्टैटिस्टिक्स कि ठीक है ये वाली कंपनी ने जो है वो पहले उसका जो शेयर जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, वो ज्यादा लोग लेते हैं, उसका ज्यादा नंबर इंक्रीज हो रहा है, सो विल इन्वेस्ट इन दैट. सो उसका वो, क्योंकि अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स लेकर के एनालाइज नहीं करेंगे उसको कि ठीक है वी वोंट बी एबल टू प्रेडिक्ट कि ठीक है फ्यूचर में इसका भी इंक्रीज होगा या नहीं होगा. सो आई थिंक स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऐसे हेल्प करेगी. साइंटिस्ट को कैसे हेल्प करेगी कि वो जो है दे बी एबल टू, ठीक है अगर कोई जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस से हम लोगों को पता चला कि ठीक है अभी जो है वायरस जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 1 से 4 हो रहा है, आगे में 4 से जो है वो 50 हो जाएंगे, क्योंकि 4 के कांटेक्ट में ऐसे जो वो है स्टैटिस्टिक्स था that they were able to predict the future trends कि अभी ऐसे हो रहा है तो आगे चल के इसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, वो ज्यादा तेजी से फैलेगा. सो दैट्स द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द वेरी क्रूशियल रोल. Is it hard to gather subjects who are unbiased, who come voluntarily?
It is obviously very hard, but not like impossible, because वही है कि there are many people who are ready to help without any, ठीक है हमें कुछ चाहिए. So it is hard, but it isn't impossible. And why is it hard? Because एक जो चीज है जो बहुत ही कॉमन है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इनटू रिसर्च एज वेल एज इनटू क्लिनिकल सेटअप. तो एक जो चीज है जो कि बहुत ही कॉमन है किसी भी एक क्लिनिकल सेटअप को आपको आगे ले जाने में और कोई भी रिसर्च को आगे कंडक्ट करने में, दैट इज रैपो फॉर्मेशन. अगर आपका रैपो फॉर्मेशन क्लाइंट्स के साथ में नहीं है तो वो एक थेरेपी सेशन के बाद दोबारा नहीं आएगा. और अगर आपका रैपो फॉर्मेशन जो है वो रिसर्चर के साथ, जो पार्टिसिपेंट जो है उसके साथ में नहीं है अच्छा, तो वो अपने जो सारे रिस्पॉन्सेज है वो बाइस्ड देगा. ही वोंट बी एबल टू ट्रस्ट यू. ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है क्यों कर रहा है रिसर्च, क्या कर रहा है, बिकॉज आपका रैपो फॉर्मेशन उसके साथ अच्छा नहीं हुआ है. सो इन दैट रीजन, अगर किसी के भी साथ आपको अनबायस्ड रिस्पॉन्सेज लेने हैं वॉलंटरली कि सामने से बंदा आए, तो इसके लिए यू हैव टू have an important skill, that is to make rapport with your clients or with your participants. That's the main thing that I've observed into clinical and research experience. How important is having a large sample size? Okay, so इसका आंसर जो है वो ये है कि जितना ज्यादा लार्ज सैंपल होगा उसकी जो जनरलाइजेबिलिटी होगी वो उतनी ज्यादा होगी. सपोजिंगली अगर मैंने 10 लोगों पे रिसर्च किया, वो भी सिर्फ अपने एरिया पे रिसर्च किया, आई वोंट बी एबल टू जनरलाइज इट इनटू जो सर्कल के बियॉन्ड है. बट अगर मेरा ज्यादा सैंपल साइज है देन माय डाटा विल बी ऑथेंटिक कि ठीक है ज्यादा लोगों पे किया है, आई विल बी एबल टू जनरलाइज इट एंड देयर आर मोर चांसेस दैट जो रिजल्ट जो आया है दैट इज वैलिड, दैट इज रिलायबल and can be replicated in future as well. Is there any difference between cultures? So okay, so I have one example for it. Culture का जो impact होता है research पे या clinical setup पे. So I was working into civil hospital, that's like government hospital into our area. So we have clients coming from rural background and they are not very much educated enough. And us time pe I was like a fresher who was working into clinical setup. So वही है कि इंग्लिश थोड़ा सा होता है ना कि टर्म्स का जल्दी से आता नहीं है कि सामने वाले को क्या बोले. सो तो पर्सन वाज शोइंग, आई मीन जो उन्होंने बताया उनके जो है वो डिप्रेसिव की फेज में ज्यादा जा रहा था. तो मेरे को क्वेश्चन पूछना था कि उनके स्लीपिंग पैटर्न के बारे में, बिकॉज अगर कोई भी डिप्रेसिव जो है आता है हमारे पास या डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है इंडिकेट कर रहे हैं, वी आस्क 3 थिंग्स दैट आर वेरी कॉमन. उनकी नींद कैसी है, उनकी भूख कैसी है और उनका मन कैसा है. तो आई हैड टू आस्क अ क्वेश्चन कि उनकी स्लीप कैसी है. तो मैंने बोला कि आप कितने घंटे सोते हो, तो ही सेड 6-7 घंटे. एंड देन आई आस्क कि ओके आपको उठने के बाद फ्रेश महसूस होता है. अभी मेरे को उस टाइम पे फ्रेश का जो था वो हिंदी वर्ड आया ही नहीं कि, और फिर वो होता है ना कि एकदम से आई वाज अ फ्रेशर कि फ्रेश का अभी मैं क्या बोलूं. तो मैंने ये बोला कि ठीक है आपको उठने के बाद जो है फ्रेश महसूस होता है. एंड ही गॉट इट इनटू अनदर सेंस कि फ्रेश होना, ही सेड कि नहीं फ्रेश तो मैं हो जाता हूँ, ऐसा पेट में कोई गड़बड़ी नहीं है मेरे. एंड आई गॉट लाइक सो एम्बैरेस्ड in front of him कि okay I meant to ask something else and he interpreted into like some other way. ऐसे ही एक और क्लाइंट था, उसमें वो था शिशर का दोहरे जो पढ़ते हैं लोग बोलते हैं सिंपल टर्म्स में. तो उसमें ही सेड कि ना उसके बाद जब दोहरे पढ़ते हैं उसको, तो जो है जो क्लाइंट है वो पलटी खाता है. तो
दोहरे जब खत्म हो जाता है, एंड आई वाज लाइक कि पलटी का मतलब ठीक है करवट लेता है, चेंजिंग द पोजीशन, बट ही मेंट टू से दैट कि वॉमिट करता है, पलटी लेता है। तो कल्चर का यहाँ पे ये इम्पैक्ट होता है कि जो टर्म्स जो है हम लोगों की जो अलग मीनिंग करती है, हो सकता है उनके लिए कुछ अलग मीनिंग करती हो। और अगर हम लोग रिसर्च में कोई भी क्वेश्चनर ऐसा यूज कर रहे हैं जिसके अंडर जो स्टेटमेंट्स है, उसका जो मीनिंग है वो सामने वाला कुछ और समझ रहा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दिए, वो कुछ और समझ आएगा, तो उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो अलग आएंगे, एंड यू वोंट बी एबल टू गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्टेटमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड, ऐसा स्टेटमेंट हो कि अगर हम लोग उसको डिफरेंट कल्चर्स में भी देखे जा रहे हैं, बट उनका मीनिंग जो है वो सेम रहे। ऐसा ना हो कि 10 लोगों को हम लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो वो 10 अलग तरीके से इंटरप्रेट करे। सो काफी सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि कल्चरली बेस्ड होते हैं, सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर कल्चर के ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ठीक है, बिकॉज everyone has a different culture and understanding. They have different terminologies, they have different meanings for same terms, different cultures में जाएंगे। So it is very crucial to have statements that we are providing in our research assessment, कि वो ऐसा हो कि उसमें जो है responses जो है वो same आए, वो उनका जो मीनिंग है वो जो हमें कन्वे हो रहा है, हमने लिख तो दिया स्टेटमेंट, बट वो सामने वालों को भी वही समझ आ रहा है या कुछ और समझ में आ रहा है। So it is very much important. What is social desirability? Social desirability is when we, faking good. मतलब सामने वाले को सोशल डिजायरेबिलिटी अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, लाइक एक कोई भी जहाँ जगह पे मैं रह रही हूँ उस देन फिर अगर कोई भी एक बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, so in order to fit into that society, in order to get myself into fitted myself into the norms of that society, I'll act in a way that is socially desirable, that is is expected from an individual to behave in a way कि ठीक है, जैसे सोशल डिजायरेबिलिटी, अगर मैं बहुत ही कहीं पे जा रही हूँ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रही हूँ, कहीं पे अगर सोशल गैदरिंग में जा रही हूँ तो सोशल डिजायरेबिलिटी बिहेव में क्या होगा कि मैं सबसे इंटरैक्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि सब एक अलग कोने में जा करके बैठ गई हूँ। दैट वुड बी कंसिडर एट बहुत ज्यादा रूड है या बहुत ज्यादा एरोगेंट है, घमंडी बहुत ज्यादा है, अलग से बैठ गई है, क्योंकि एक सोशल गैदरिंग है, यू हैव टू इंटरैक्ट विद अदर्स and in order to be accepted by others. And speaking in terms of research, how are socially desirable answers given? Okay, so that depends upon the debriefing जो और जो रैपो फॉर्मेशन है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज अगर आपने डीब्रीफ अच्छे से किया है उसे, और अगर आपका रैपो फॉर्मेशन अच्छा है तो सामने वाले को लगेगा ठीक है, वट एवर आई एम इंफॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग would be kept confidential and would not be उसका कोई भी स्टिग्मा नहीं होगा। अगर जब वर्ड जो है स्टिग्मा हट जाएगा ना, तो फिर सोशल डिजायरेबल जो रिस्पॉन्सेज हम लोग जो लोगों के बायस्ड रिस्पॉन्सेज आते हैं, अगर स्टिग्मा हट जाता है तो वो हमारे पास जो है रिस्पॉन्सेज जो है वो करेक्ट आएंगे, वो अनबायस्ड आएंगे। तो अगर आपने टॉपिक जो है सामने वाले को पहले से ही अच्छे से समझाया है, जिससे मतलब इस तरीके से समझाया है कि उसके मन में कोई भी स्टिग्मा ना डेवलप हो, कि ठीक है, सपोजिंग इफ आई से कि ठीक है आई एम टेस्टिंग योर लेवल ऑफ कि आपका डिप्रेशन जो है वो माइल्ड मॉडरेट सिवियर है, तो यू विल बी लाइक ओके आई डोंट हैव डिप्रेशन, व्हाई द पर्सन इज डायग्नोजिंग मी एज अ डिप्रेसिव पेशेंट। सो यू विल बी लाइक कि ठीक है, जितने भी वहां पर होगा कि ठीक है आपको भूख लगती है, हाँ मुझे लगती है, आपका मन सही दुखी रहता है, नहीं मेरा मन दुखी नहीं रहता है, सो यू विल एक्ट ठीक है मैं ठीक हूँ, यू विल एक्ट इन दैट वे। बट अगर आप उसको नहीं बता रहे हो कि ठीक है आई एम डायग्नोसिंग यू विद अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर,
So the person won't give any unbiased responses. सिर्फ उनको ये बोलो कि ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि आपने जो सिम्टम्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब क्या है, सो दैट कि हम लोग ट्रीटमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग पे दे पाए। अगर उसको पहले ही बोल रहे कि हम लोग आपको स्किज़ोफ्रेनिक जो है डायग्नोस करने वाले हैं, वो बंदा पहले ही बोल देगा कि ठीक है, हाँ मैं नहीं कर रहा, आई एम ऑल गुड, आई एम नॉट एबनॉर्मल। क्योंकि साइकोलॉजी में तो डिसऑर्डर्स को लेकर, डिसऑर्डर जो है वो जैसे बाकी सारी कैंसर है या जो भी बीपी की है वही सारी होते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बट वही स्टिग्मा अटैच्ड है। देयर इज टू मच स्टिग्मा। और अगर आप लोग ऐसे बात करते वक्त भी यू आर नॉट एबल टू debrief them, you are not able to make rapport formation with the client, you won't be able to get unbiased result। वहां पर biased responses आएंगे ही आएंगे। no one Do you wants think? them to Yeah. कि Go ठीक है, ahead. हाँ पागल बोल दे हमें कोई भी। Hmm. no one wants them। Do you think this stigma is more in India compared to Western countries? yes, that is very much true, because in India we need a pandemic to talk about mental health। पैंडेमिक से पहले there was no one was talking about mental health, no one was talking about ठीक है मेरा मन जो है मतलब I am getting bored in four walls, like I'm I'm not able to, मेरा मन जो है वो ठीक नहीं रह रहा, मेरी जो भूख जो है कुछ स्लीपिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। no one was talking about mental health। in India, people need, want to have a pandemic to talk about mental health. They need to have someone who is very, known in the field. जब सुशांत सिंह राजपूत की जो है केस आया था, after that people starting to talk about mental health. So they want, something big to happen in order to, उसके ऊपर काम करने के लिए। But दूसरी कंट्रीज में क्या होता है, पहले ही इनिशियल स्टेज पे अर्ली इंटरवेंशन हो जाते हैं, सो दैट कि वो ज्यादा बढ़े ही ना। इंडिया में बहुत ज्यादा स्टिग्मा है हर एक चीज को लेकर के, स्पेशली इफ यू टॉकिंग डाउन मेंटल हेल्थ, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा मेंटल हेल्थ है, लोग पागल बोलेंगे। उनको ये नहीं पता कि मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो लाइक योर फिजिकल हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो दिस इज लाइक वेरी मच visible difference between our country and compared to other countries। वहां पर ज्यादा नॉलेज है, वहां पे ज्यादा एक्सेप्टेंस है, बट यहाँ पर नहीं है। एंड रीजन बिकॉज यहाँ पर कोई बात नहीं करता। Hmm. वहां पे दे टॉक ओपनली अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है ये चीजें होती है। Why is early intervention of mental disorders better and helpful? कोई भी चीज को अगर हम लोग इनिशियल स्टेज पे अगर हम लोग इंटरवेंशन देकर के ट्रीट कर देते हैं, और हम लोग उसको एक स्टेज पर जाने ही ना दे कि वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सो इट With इज anything, ऑलवेज बेटर, या विद एनीथिंग, नॉट जस्ट लाइक right? कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी है। अगर बीपी की भी प्रॉब्लम्स है, आप सही टाइम पे डायग्नोस नहीं करोगे, you'll have you'll faint अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो उसकी। अगर आपका बहुत ज्यादा बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, यू मे गेट अ हार्ट अटैक एज वेल। तो किसी भी चीज को आप अर्ली इंटरवेंशन अगर दोगे तो उसका जो देयर आर चांसेस कि उसके जो ज्यादा नुकसान जो है वो कम हो जाएंगे। Yeah, होए ना, because या हो ही ना हो सकता है, yeah, क्योंकि साइकोलॉजी में क्या होता है, कोई भी अगर हम लोगों के पास आ रहा है डिसऑर्डर वाला, तो देर आर थ्री थिंग्स जो कि होती है। या तो वो बंदा बहुत एकदम ठीक हो जाएगा, या वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, या ये होगा कि वो कभी ठीक हो रहा है या कभी वो दोबारा से मतलब उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। सो देर आर लाइक थ्री थिंग्स। तो अगर हम लोग अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो वहां पे भी मेरे अकॉर्डिंग तीनों ये जो चीजें हैं वो होगी। या तो वो बिल्कुल नहीं होगी आगे चल के, या हो सकता है वो हो, या हो सकता है कि वो कभी कभारी हो कभी कभारी ना हो, मतलब फ्लक्चुएट करती रहे। okay, Nikita, thank you. It was really nice talking to you, very informative. So I'll stop the recording here. Thank you so much for having me। Yeah.